Okay, so what we have seen till now is that you have this signal excess of t, which is the sampled signal. These are impulses, and then what you get is xn, which is the discrete time sequence. Now, as I said that if you have xs of t, what you have to do is you have to take or divide the whole axis of t with capital T. Okay, so dividing the axis by capital T will result into xn. So यही division इधर भी हो रही होगी, right? So if you divide this by the whole axis by capital T in time domain, तो यहाँ भी आप division कर रहे हैं ये, instead of minus t you have -1, 0, 1, 2, 3. So ये n की form में आप लिख रहे हैं. Similarly, this t gets cancelled out and this t gets cancelled out as well. So जैसे मैंने कहा कि आपको इससे आगे replace करना है, replace this n with k. So replace n with k. Okay. So मैं अभी क्या कर रहा हूँ इसको रब करने के लिए, I'm going to use this chlorocept. Okay, sanitizer है. तो आजकल सैनिटाइजर वैसे भी काफ़ी यूज़ करने चाहिए कोविड-19 की वजह से. सो मैंने ये सैनिटाइज किया है, इसको सैनिटाइजर को यूज़ किया है और उससे मैं इसको साफ कर रहा हूँ. Okay. So once I do this, x of n will be now equal to summation xc of n delta of t over capital T minus n, and n is from minus infinity to infinity. चूंकि हमने n को replace करना है with k, so what you get is xc of k. Now एक चीज हमें पता है that actually t over small t over capital T is actually equal to n, क्योंकि x of n में जब क्या आप कर रहे होते हैं, जब लिख रहे हैं इसको excess of t को x of n की फॉर्म में, then what you are doing is t equal to nt suppose कर रहे हैं. So t equal to nt करेंगे तो x of n आपको मिलेगा. Okay, so इसलिए or alternatively what you can write is that n is equal to t over capital T. ठीक है, तो यहाँ तो n होना चाहिए. Therefore delta of n अगर आप लिखेंगे तो this gets replaced with k. Summation is also on k equal to minus infinity to infinity, and what you get is x of n. तो जैसे मैंने कहा, these are the weighted shifted impulses, right? So hopefully ये concept अब आपको clear होगा कि time domain में हम किस तरीके से signal को impulses में convert करते हैं by multiplying an impulse train with the signal, और फिर उसके बाद उसको एक impulse train to discrete time signal converter में से गुजारते हैं. कैपिटल T से बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं ऑल एक्सेस को, तो हमें जो है x of n मिल जाता है, और x of n is the weighted shifted sum of weighted shifted impulses. So also sum of weighted shifted, ये sum भी है, right? So let's do a bit more sanitization.
rub it off. And I will start with the frequency domain representation of a sample signal. So frequency domains representation of a sample signal आपने मैम सुमैया के लेक्चर्स में देखा है, और अब मैं उसको थोड़ा ज़्यादा एलैबोरेट करूँगा थ्रू डायग्राम्स एंड थ्रू मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस. सो अगर आपके पास एक सिग्नल है जो कि सैम्पल सिग्नल है xc of t, and it is a signal like this as was assumed earlier, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो नॉर्मली एग्जाम में भी आपको इसी तरीके का एक, अगर हम बताएंगे नहीं तो इस किस्म का एक ट्रायंगुलर शेप आप अज्यूम कर सकते हैं विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 1. इट इज कॉल्ड xc of j of omega, and the maximum this omega of n is the maximum frequency of the signal, right? So if you look at this signal, हमने इसको सैंपल किया था by multiplying it with a train of impulses. तो अगर impulse train को देखें तो इस किस्म का सीक्वेंस है. Zero t, 2t, 3t, 4t, and onwards minus t, and like this. So इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म ले, that is also a impulse train with 2 pi over t spacing. So minus 2 pi over t, and then so on. 2 into 2 pi over t, and so on. So यहाँ पे एक चीज important है, that if this is a impulse train which is summation n equal to minus infinity to infinity delta of t minus nt, which is s of t, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है as per our signal system knowledge, this is 2 pi over capital T divided by into summation k equal to minus infinity to infinity delta of omega minus k times 2 pi over capital T. So ये 2 pi apart है each one of these impulses, right? और उसका amplitude है 2 pi over t. So amplitude is 2 pi over capital T. ये हर इम्पल्स जो इधर आ रही है, यहाँ पे जो इम्पल्स है उसका एम्पलीट्यूड 1 है, मगर जो इधर इम्पल्सेस है इनका 2 पाई ओवर कैपिटल टी है, राइट? The other thing which we studied in the previous lecture was that xc of t multiplied by s of t will give you the sample signal xs of t, right? Lekin what happens in the frequency domain is that these two signals, this is now the Fourier transform of the sample signal, which is s of j omega. So let me rub this. This is s of j omega, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है इस सिग्नल का. So s of j omega, ये दोनों सिग्नल जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, so if xc of t is being multiplied by s of t in frequency domain, what we get is convolution. So 2 pi xc of j omega will get convolved with s of j of omega. Okay. So this convolution means that now अगर इस सिग्नल को सारे को मैं फिक्स कर लूं और इसको फ्लिप करूं और फिर शिफ्ट करना शुरू करूं, तो जैसे जैसे ये शिफ्टिंग के
शिफ्ट करने के बाद मल्टीप्लाई होना है इस इम्पल्स के साथ, इस इम्पल्स के साथ, इस इम्पल्स के साथ एंड सो ऑन। तो ये एक तरह की शिफ्टिंग होगी और उसमें इम्पल्स गायब हो जाएगी और ये जो सीक्वेंस ये जो हमारे पास एच सी ऑफ जे ओमेगा है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो व्हाट यू गेट, यहाँ पे तो हमें पता है टाइम डोमेन में क्या होता है, यू गेट इम्पल्सेस और उनमें जितने एम्पलीट्यूड्स हैं वो नजर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे व्हाट यू गेट हियर इज some kind of a sequence like this, rather not a sequence but a shape like this, 0 पे 2 pi over t पे minus 2 pi over capital T and so on। आपको एक एम्पलीट्यूड, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है एम्पलीट्यूड। सो 1/2 pi gets multiplied with this, gets cancelled out with this 2 pi जब ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं या कन्वॉल्व होते हैं। तो एम्पलीट्यूड जो है ना वो रिजल्टेंट एक्स एस ऑफ जे ओमेगा का वो 1/t रह जाएगा। ठीक है, सो यू हैव दिस एट 4 pi over t एंड सो ऑन, मगर उन सब का एम्पलीट्यूड जो है 1/t होगा, राइट। सो एक्स एस ऑफ जे ओमेगा अब इंपॉर्टेंट है कि वो क्या चीज है। थोड़ी ज्यादा सैनिटाइजेशन हो गई है तो आई लीव दिस here। So x of j omega is 1/2 pi xc of j omega convolved with 2 pi over capital T, and the summation is delta of omega minus k times 2 pi over capital T. Okay, and the value of k is from minus infinity to infinity. These two gets cancelled and we have 1/t summation k equal to minus infinity to infinity x of c j of omega minus k times 2 pi over capital T. In other words, क्योंकि हमें पता है 2 pi over t is also equal to omega s, तो आप इसको 1/t summation k is from minus infinity to infinity xc of j of omega minus omega s भी लिख सकते हैं and k times omega s. Okay, rub this, rewrite again. यानी xc of j omega यही जो सिग्नल है, it will be shifted by an amount k times omega s. So जहाँ पे k 0 है, you get this signal k1 omega s, k2 2 times omega s, k3 3 times omega s. Similarly, minus omega s, minus 4 omega s and so on. ठीक है, तो ये आपका सिग्नल जो कि सैम्पल्ड सिग्नल है एक्स एस ऑफ जे ऑफ ओमेगा इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ओके, नाउ let me draw this same diagram here. So if this is xs of j of omega, it is 0 omega s
minus omega s minus 2 times omega s minus 2 times omega s. So this plus 2 times this one and then 1 over t. So अगर मैं कहूँ कि कोई सिग्नल है और उसको मैंने सैंपल किया है तो यू नो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में सैम्पलिंग के बाद जो भी सिग्नल के मेन वो है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस उसके जो वर्जन्स होंगे यू विल हैव डिफरेंट वर्जन्स कमिंग एट ओमेगा एस 2 ओमेगा एस 3 टाइम्स ओमेगा एस एंड माइनस ओमेगा एस 2 टाइम माइनस 2 टाइम्स ओमेगा एस एंड सो ऑन उनके साथ एम्पलीट्यूड 1 ओवर टी मल्टीप्लाई होगा राइट सो टाइम डोमेन में तो आपने देख लिया बट फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये रिप्रेजेंटेशन होगी as I said that the maximum frequency of this signal is omega n. So this point is important. ये जो point है, this is actually because ये जो maximum frequency है वो omega s तक है. This point is omega s minus omega n, and this point is similarly omega s plus omega n. So ये means frequency response है उसके बाद जो है this is the first replica and there are other replicas as well. So ये जो replica है यहाँ पे exist करता है इसका ये वाला point और इसका ये वाला point जो कि maximum frequency का point है ये दोनों overlap नहीं करने चाहिए. So ये distance इतना होना चाहिए that omega s minus omega n should be greater than equal to omega n. In other words, omega s is greater than equal to 2 times omega n, where omega n is the or twice the maximum frequency. Okay. So omega n is the maximum frequency. So 2 times omega n or 2 times the maximum frequency is the sampling frequency. So this one is the sampling frequency. Now what happens is if that is not there, okay, if or the other thing is this relationship is called the Nyquist sampling theorem. Now the Nyquist sampling theorem, if it is not satisfied, that is omega s is less than 2 times omega n, तो क्या होगा? So if that is there, what you are saying essentially is that I have this omega n and that omega s is here and there is an overlap between, let me draw it again. With a wider angle. So this is my 0, this is omega n, and this is omega s. And this point here is omega s minus omega n. So ये तभी possible है कि ये overlap हो जब ये वाली condition true है that omega s is less than 2 times omega n. Okay, ये value जो इधर आ रही है ये omega s minus omega n की ये इससे omega n से पीछे की तरफ आ रही है. In that case, there is this double-edged sword that you get, and there is distortion. Okay.
तो डिस्टॉर्शन की वजह से आपको सिग्नल जो है जब आप सैम्पलिंग कर रहे हैं तो वो सही रिकॉर्ड भी नहीं होगा, आप सही से उसको सुन भी नहीं सकते, और सिग्नल जो है वो रिकवर भी नहीं हो सकता। यानी इस केस में रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगी, रिकंस्ट्रक्शन का पूरा प्रोसेस दोबारा से देख लेते हैं। और लेकिन इस केस में तो रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये वाला जो सिग्नल है इस पॉइंट से आगे वो तो ज़ाया हो चुका है। ये वाला सिग्नल रिकवर किया जा सकता है, लेकिन इस पॉइंट से आगे सिग्नल रिकवर नहीं किया जा सकता। ओके, एक चीज जो हम aliasing को, so this process where double-edged sword is there and there is distortion is called aliasing. To avoid aliasing, what you can do is कि अगर आपको पता है कि मेरा I am sampling at this frequency omega s और वो चेंज नहीं हो सकती, so sampler frequency is fixed and now I have a signal कि जिसकी bandwidth या maximum frequency, so this is the bandwidth और maximum frequency of the signal. यहाँ पे भी हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को बैंडविड्थ भी कह सकते हैं। So this bandwidth is greater than what is the expected expectation of a sampler. ठीक है, सैम्पलर तो अगर लेट सपोज यहाँ पे है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ट्वाइस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मैं कहता हूँ कि 8000 हर्ट्ज है और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ओमेगा एन इज लेट्स से 2000 hertz. Okay, so this is 2000 hertz. So हमें पता है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज 4 times ओमेगा एन। ओके, यानी हम 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 times ओमेगा एन भी तो रख सकते हैं, यानी कि हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को 4 times द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि दिस पॉइंट omega s minus omega n is how much? It's 6000 here. ठीक है, तो आप half of the sampling frequency which is 4000 रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक फिल्टर बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि यहाँ पे आप एक ओमेगा सी ले सकते हैं विच इज ओमेगा सी इज ओमेगा एस ओवर 2, सो इन दिस केस इट इज 4000 हर्ट्ज। तो 4000 हर्ट्ज है तो ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 2000 ये तो इसके अंदर आ रही है। इसका एम्पलीट्यूड हमने देखा था कि आप कैपिटल टी रख सकते हैं, तो अब आपका ये सिग्नल रिकवर हो सकता है। मगर यहाँ पे तो ये रिकवर नहीं हो सकता चाहे आप कुछ भी कर लें, क्योंकि ये दोनों जो है ये एलियस कर रहे हैं। नाउ टू अवॉइड दैट व्हाट यू कैन डू इज के चूंकि इस केस में हमने इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, हमने ओमेगा एस को लेस देन 2 times ओमेगा एन रखा है। लेट्स सपोज मैंने ओमेगा एन तो 2000 ही रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ओमेगा एस को रखा है से 1500। ओके, सो ओमेगा एन इज 2000 हर्ट्ज और चलें इसको कह लेते हैं ओमेगा एस इज 2500 हर्ट्ज। तो in this case omega s is less than 2 times omega n. Okay, 2 times omega n is 4000, मगर हम तो 2500 हर्ट्ज रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एलियसिंग तो होगी और उसकी वजह से सिग्नल डिस्टॉर्ट होगा। बट what to do in this case? What you can do is that you can build a anti-aliasing एनालॉग फिल्टर। ठीक है, और एंटी एलियासिंग एनालॉग फिल्टर ये करता है कि वो ओमेगा एस को देखता है और
जो उसका कट ऑफ है ओमेगा सी, it should be less than omega s divided by 2. ओके, तो ओमेगा एस डिवाइड बाय 2 करके जो भी या इक्वल टू ओमेगा एस ओवर 2 करके जो भी वैल्यूज जो हैं सिग्नल की मैक्सिमम बैंडविड्थ की जो है वो कट कर देता है. सो लेट मी ड्रॉ इट. So what it will do is that it will look at the signal, and this is a h of j of omega. A stands for anti-aliasing filter. तो ये सिग्नल को इस तरीके से कट कर देगा. नाउ आई नो कि ये तो 0 है, ये ओमेगा एस है. अब चूंकि ये जो कट ऑफ है इसका ओमेगा एस ओवर 2 है, तो सिग्नल जो सैंपल्ड होगा वो इस तरीके से सैंपल करके मुझे मिल जाएगा माइनस ओमेगा एस. यानी ये जो इसकी मैक्सिमम बैंडविड्थ है वो पहले ओमेगा एन थी, अब वो थोड़ी हो गई है, उसको हम कह सकते हैं वो ओमेगा एन डैश हो गई है. मगर एलियासिंग उसमें नहीं है. सैंपल किया तो उसके बाद एक रेप्लिका ये आया, एक रेप्लिका ये आया, एक रेप्लिका ये आया. ठीक है. So anti-aliasing filter helps us in this way that it removes the distortion, it removes the alias parts from the signal. Okay. Right. Um, let's look a bit more in depth at the Nyquist criteria for sampling. In the next video.